Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the third video about the general English, and today we will discuss techniques to analyze a written text or a creative piece of writing, especially a paragraph, in a different way. As we know that there are two ways by which we assess or give scores to a written piece of writing or descriptive essay or narrative essay or academic essay or paragraph. So we will discuss it today so that you will get new ideas and practice those ideas in your writing. लेकिन आगे जाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि बेल आइकन को भी आप उसको टच करें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. So first of all we will discuss something about the marking criteria of and its type. इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? Why do I think it necessary? Because there are many students or many writers who said that we write good things, we incorporate many ideas, but still we don't get good marks. So होता तो ये है कि बाज़ वक़्त स्टूडेंट्स जो हैं वो सही तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, प्रैक्टिस की वजह से, कुछ और एरर्स की वजह से, कुछ मिस्टेक्स भी वो कर लेते हैं. लेकिन इसमें एक सब बड़ा रोल जो है वो हमारे जो असेसमेंट क्राइटेरिया है उसका भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. अगर उसको कैसे बेहतर किया जाए ताकि स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स ले सकें उसको डिस्कस करते हैं कि एक पीस ऑफ राइटिंग को किस तरीके से अच्छे तरीके से उसमें रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है ताकि हर एक स्टूडेंट जो है वो उसको प्रैक्टिस करे और अच्छे मार्क्स ले. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेसिंग अ रिटन पीस ऑफ राइटिंग. द फर्स्ट इज़ इम्प्रेशन मेथड and second is analytic method. So impressionistic or impression method, what is this? And you are well aware of it because it is used in our traditional board, university or in school exams or college internal exams. So impressionistic marking में होता क्या है कि instant personal judgment. First of all उसमें देखा क्या जाता है, number one grammar, capitalization or flow of thought sometime or writing कैसी है, एक general impression, we see the general impression there, and after that it is up to the examiner to grant 80% marks, 60% marks or 70% marks. It is up to him, or even 50% or lower than 50%. Because it is impressionistic marking and it is actually practiced in our examination system nowadays. That is why students marks are not we can say that हम ये भी कह सकते हैं कि उनके मार्क्स जो होते हैं वो इतने काबिल एतबार नहीं होते कि कितने नंबर लिए. Sometimes students complain that we wrote very good papers, we did very good paper, but we could not get our right. So they apply for rechecking or retotaling and so on. So this is impressionistic marking. Here instant personal judgment यानी फौरी तौर पे वो एग्जामिनर खुद देखता है कि उसकी जजमेंट को. But another standard method is analytic method. अब एनालिटिक मेथड क्या होता है? एनालिटिक मेथड में असेसिंग सेपरेट पार्ट्स. अब एनालिटिक मेथड में जो एक पीस ऑफ राइटिंग है, सपोज़ आपके पास एक पैराग्राफ है तो उसका सेपरेट पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ उनको ब्रेकअप किया जाता है सेपरेट पार्ट्स में और एग्ज़ामिनर उसके मुताबिक मार्क्स देते हैं. अब उसमें
चेक क्या किया जाता है, असेसिंग सेपरेट पार्ट्स मीन के उसमें चेक किया जाता है कि आइडियाज़ का फ्लो सही है या नहीं है, कोहेरेंस है या नहीं है, देयर इज़ यूनिटी ऑफ मीनिंग्स और वेदर यूनिटी ऑफ मीनिंग exists or not, or flow of thoughts, is it logical or not, grammar or word choice, diction, everything is judged. Okay, अब उसके बाद अगली चीज़ की जाती है objective grading. By objective grading mean that you the impression which you get in impressionistic marking, its role is very low. Objectively, you have to read or assess each and every item very carefully. बहुत ही एहतियात के साथ आप उसको पढ़ते हैं and then you give marks. And this is I can say it's a durable method. ये एक पायदार तरीका है and in this way students can get their right to some extent. Now let us suppose we have a piece of writing or paragraph. In previous video of general English, we discussed about the paragraph, that what is a paragraph, how to write a well-knit paragraph. It depends upon practice. But now we discuss that what should we have in a paragraph, in an article or in an essay. Okay, we discuss it. So first of all, let us suppose we have a paragraph. A student or a group of students, they wrote a paragraph, right? And in this paragraph, now that piece of writing is before the examiner. If अगर वो अप्लाई करता है एनालिटिकल मेथड और एनालिटिक मेथड और अप्रोच, तो सबसे पहले उसको ब्रेकअप करेगा वो. Let us suppose we have 50 marks for assessment. अब इसको हम ब्रेकअप करते हैं कंटेंट, पंक्चुएशन, पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रामर में. कंटेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कंटेंट में के लिए कितने मार्क्स देते हैं. लेट अस सपोज वी शुड हैव 15 marks for content. 15 marks. और कंटेंट में क्या होता है, देखा ये जाता है कि लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज. द फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग इज आइडिया. इफ you are able to generate new ideas or incorporate those ideas, disseminate those ideas successfully, then you are a good writer, you are successful. फिर उसके बाद next is coherence, unity of meanings. Logically everything, I mean sentences should coincide with each other, nothing should be superfluous. कोई चीज़ भी ऐसी ना हो कि वो मतलब इजाफी नज़र आए या मिसफिट नज़र आए उसमें. एंड थर्ड थिंग इज़ नॉलेज. नॉलेज मीन दैट यू आपने बहुत प्रिपेयर अपने आप को किया होगा, मुख्तलिफ आर्टिकल्स को देखा होगा, मुख्तलिफ नोट्स या आप अपने टीचर से हेल्प ली होगी. तो वो चीज़ जो है अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, यू राइट इट ऑन योर पेपर, देन इट मीन्स दैट you have successfully covered content portion and you got 15 marks. All right, and next is punctuation. For punctuation, then we have 35 marks now, and for punctuation 10 marks are enough. For punctuation mean where to put full stop, where to put comma, inverted commas, question mark or slash, dash, underscore, but let us suppose it everything. Now for punctuation we have 10 marks, and that is very much important. Punctuation is important because sometimes you have to break up the sentences, you have to start new idea, right? So these punctuations are important and we grant it 10 marks. And now let us come to the third in analytical approach. उसमें हम आ जाते हैं कि तीसरे नंबर पे पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन.
For paragraph organization, again, let us suppose we can give 10 marks. In paragraph organization, या जो आपका पैराग्राफ है, सपोज एक पैराग्राफ है या आपके 5 पैराग्राफ्स हैं इन अ वेल नेट ऐसे और आर्टिकल, तो आपने उनमें कौन से पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कौन से इफेक्टिव वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, और इडियम्स अगर आपने कोई यूज़ किए हैं, वर्ड चॉइस आपकी क्या है। सो पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन अगेन हम इसमें ला सकते हैं कोहेरेंस को अगेन, कि कोई यूनिटी ऑफ मीनिंग्स हो लॉजिकली, एवरी सेंटेंस दैट टॉपिक सेंटेंस शुड कम फर्स्ट, देन द सपोर्टिंग डिटेल एंड अदर सपोर्टिंग डिटेल एंड अदर सपोर्टिंग डिटेल एंड सो ऑन. I mean it should have a impressive beginning, a convincing middle and a logical end. तो ये तीनों पार्ट अगर हो जाते हैं तो वो आपकी पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन ज़बरदस्त है. अब लास्ट है grammar, and for grammar we gave again 15 marks. Now you can add them, 15 plus 15 30, and then 20, 30 plus 20, 10 plus 10, it's 50 marks. And in grammar, spellings are checked, capitalization is checked, spelling, your spelling should be should be correct. Capitalization, that after every full stop the first word is should be capital. Or for proper noun, suppose you write the name of any person, place or thing, or a book, whatever, these are the general rule. First word should be capital, right? And then sentence construction, simple sentences or complex sentences, we will discuss it later on in other videos, what is simple sentence, what is complex sentences. Those sentences should be correct, and subject to verb agreement, right? And all these things you can practice, and practice, then you will be able to write them correctly. अब ये 4 चीज़ें आ गई, यानी कि कंटेंट है, पंक्चुएशन, पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रामर. एंड आफ्टर दैट you will be able to say that whatever I got are authentic, whatever I got, the marks, I mean the score you have got, the score is authentic and everything has been scrutinized. हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर सही तरीके से इस फार्मूले के मुताबिक देखा है. Thank you very much and we'll see you next time inshallah.